हेलो एंड वेलकम टू द ओपन फॉर्मेट्स नेक्स्ट एपिसोड। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब की। पंजाब का इतिहास क्या रहा? सच एन इम्पॉर्टेंट रीजन, transnational identity, Punjab, which has commanded not just the cultural nuances but also the political history, important part of political history of the Indian subcontinent. What has been history of Punjab? Well, as it is, as I've said already, it's a vast area of research, understanding and history in itself. एक एपिसोड में पंजाब की हिस्ट्री बताना impossible है. lot of literature has been written on Punjab's history. So in this episode, this is basically, I'll be giving, a kind of a timeline. क्या क्या basic events रहे हैं पंजाब के इतिहास में from what all I've read about Punjab's history. It's a lot of things are hazy. कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं there is a tendency to rely on hearsay or bardic tales और local literature. So उन सब का जो है जितना मैं possibly पढ़ पाया, lot of जो local writers जो रहे हैं were written on Punjab cities, not necessarily on Punjab region but Punjab cities. थोड़ा बहुत उनसे I have learnt about certain historical aspects of history of Punjab, and this is one area which personally fascinates me. Not just because of events in the modern Indian times but also how this has been cradle of several civilizations, and of course like several events that has happened in this region which has gone on to shape the destiny of Indian subcontinent. Starting with हम देखते हैं कि तकरीबन जो है 6500 BC, around 8500 years ago, we see activities, agrarian activities happening in Punjab. पंजाब रीजन जो है, जो हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में है, it's famous for its agriculture. Besides, of course, like its food, culture, literature, music, arts, its martial history, its history with foundation of the modernmost religion, Sikhism, and several Sufi movements happening over there. And then we have literary figures like Bulle Shah, Waris Shah, who have influenced a lot of culture, not just in folk music or in writing but also in the basic understanding of Punjab's syncretic culture. So ये बहुत सारी चीज़ें रही हैं पंजाब की हिस्ट्री में, बट हम देखते हैं कि फार्मिंग इज़ वन आस्पेक्ट विच हैज़ बीन एटर्नल, विच हैज़ बीन ऑल एनकम्पासिंग. हर दौर में, हर पड़ाव में जो है फार्मिंग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहा है पंजाब की हिस्ट्री का. तो जैसे ही हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की बात करते हैं तो 8500 साल पहले दे हैव बीन ट्रेसेस ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पंजाब रीजन. जो फर्स्ट हमें ट्रेसेस मिलते हैं कल्टिवेशन के, वीट के, बार्ली के, वो मिलते हैं मेहरगढ़ में, जो आज की तारीख में बलोचिस्तान प्रोविंस में है. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम जाग्रोस, द Iranian region, to Mehergarh, and then they come towards Punjab and Sindh area, और वहाँ पे जो है because of its a highly fertile soil, courtesy 5 rivers, और जिसके बाद जो है इसका नाम पड़ना शुरू हुआ पंजाब. तो वहाँ पे जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी कल्टिवेशन एक्टिविटीज़, इट टेक्स इट्स ओन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. Punjab region has also been the center of Harappan or the Indus-valley civilization, the indigenous civilization of Indian subcontinent. वही हमारे एक कह सकते हैं कल्चर का एक फोकल पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बाद से जो है पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्लोली आफ्टर द years and years and years we see roots of civilization and the roots of nation state starting to come into being from there. और साथ में जो है हम देखते हैं कि अराउंड 1500 BC जो ऋग्वेद है उसका कॉम्पोजिशन जो है वो पंजाब एरिया में हुआ है. एंड पंजाब का जो है मेंशन होता है इन वैदिक लिटरेचर एज वेल. सब सिंधु नाम से इस एरिया को रेफर किया गया है. उसके बाद देन लॉट ऑफ ग्रीक लिटरेचर्स, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ ग्रीक रेड्स अक्रॉस द रिवर इंडस, और उसमें जो है पेंटोपोटामिया नाम से जो है पंजाब को रेफर किया गया है. सो पंजाब जो है फोकल पॉइंट रहा है खास कर कि आफ्टर
establishment of indigenous civilization and then the migration of people from Central Asian steppes, और उसके बाद जो है जो यूरोपियन रेड्स रही हैं यहाँ पे विच वर्क वेल टाइम टू टाइम। जैसे हम देखते हैं कि मौर्यन काल के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के टाइम पे भी जो है यहाँ पे जो यूनान से, जिनको युवन के नाम से बोला जाता था, वो यहाँ पे आए हैं और उनका काफ़ी जो है मूवमेंट रही है इस दौरान। जो है मौर्य काल में भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य टाइम पे भी हम देखते हैं कि कांदाहार और जो पेशावर का एरिया है दैट वाज वेरी बिजी रूट इंक्लूडिंग तक्षशिला एज वेल। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब इज ऑलवेज बीन देयर एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट political points or a fixture in the events of history, shaping several early kingdoms and kingships. Moving forward to something around Delhi Sultanate times, we hear the word Punjab. As I said, उसके पहले हमें जो है Greek literature में पेंटोपोटामिया नाम से सुनाई देता है कि ऐसा ऐसा कोई region है, and then during in Ved we hear words like Sapta Sindhu, and there is also mention of Punjab region in Mahabharata as well, in Mahabharata literature, where it's referred to as Panjanad. लेकिन आते आते जब देखते हैं हम lot of Turkic and Arab travelers जो यहाँ पे रहे हैं like इब्न बतूता, उनकी राइटिंग्स में देखने को मिलता है कि पंजाब नाम से एक रीजन है। पंजाब क्या हुआ, 5 रिवर्स जो हैं इंडस को हटा के जो आपकी हैं चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलुज, इन सब को मिला के जो पूरा एक रीजन बनता है उसको हम पंजाब कहते हैं। और यही जो है यहाँ से जो एटिमोलॉजिकली जो है जो एक तरीके से कि क्या इस जो ओरिजिन रही है पंजाब वर्ड की वो यही 5 रिवर्स से आती है। लेकिन बात यही नहीं है, वी ऑल्सो हैव सर्टन व्हाई दीज रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो 2 रिवर्स हैं उनके बीच के जो रीजन होते हैं उनको दोआब बोलते हैं और हर दोआब का अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है। जैसे कि कई पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं, कई कल्चरल इवेंट्स रहे हैं जिनका मेंशन हुआ है, जैसे कि इंडस और झेलम के बीच में बोलते हैं सिंधु सागर दोआब, झेलम चेनाब के बीच में हो गया आपका छेज दोआब, और चेनाब और रावी के बीच में हो गया आपका रचना दोआब। इसी तरह से रावी और व्यास के बीच में हो गया बारी दोआब, और व्यास और झेलम के बीच में हो गया बिस दोआब। तो ये जो है हर एक दोआब का भी अपना एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रहा है, और हर एक लिटरेचर में और जैसे ही सबसीक्वेंट जो रूल्स रहे हैं उनमें जो है इन रीजन को सब रीजन के तौर पे भी रेफर किया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि अकबर के टाइम पे जो है पंजाब ग्रोज इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमी, जो एक स्टेबिलिटी का दौर आया अकबर के टाइम पे, बिकॉज उससे पहले कई रेड्स हो रहे थे, स्पेशली जो तिमूर लंग है उसके टाइम के जो रेड्स रहे हैं दैट हैज़ डेवस्टेटेड पंजाब, एंड स्पेशली ही हैज़ टेकन द रूट बिलो द माउंटेन्स, बिलो द लोअर रीचेस ऑफ हिमालयाज। तो वो आया जो है आपका जो है खैबर पास से होता हुआ, सेंट्रल एशिया से खैबर पास और नोलान बोलान पास, इस वहाँ से उसकी जो है बाकी फोर्स वगैरह आई थी बाकी। और उसके बाद जो रेडर्स दे हैव टेकन द डाउनवर्ड रूट, एंड देन लाइक आफ्टर सैकिंग दिल्ली पे हमला करने के बाद जो है तिमूर लंग वापस गया पंजाब से होता होता, और जो उसके रास्ते में आया कहा जाता है कि डेवस्टेशन वाज रिट लार्ज, सब जगह जो है तबाही हो गई थी। सो पंजाब सफर्ड अ लॉट इन दैट रेड। ओनली ड्यूरिंग अकबर्स टाइम आते आते जो है जब काफ़ी रिबेलियन और काफ़ी जो है रेड्स क्वेल हो चुकी थी, सब खत्म मोर और लेस जो है कंट्रोल में आ गया था एक तरह से। we've had like slightly different statecraft during Akbar's time. उसमें हम देखते हैं कि there has been lot of economic significance, and Punjab agriculture once again starts minting gold for the state. तो उसी तरह से जो है lot of fields and paddies and wheat, barley, ज्वार and फ्रूट्स, एग्जॉटिक फ्रूट्स, वो सब वहाँ पे जो है उनका उगना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है एक ऑर्गेनाइज्ड इकॉनमी के तौर पे जो है वो रीजन फिर से अपना आ जाता है। बिसाइड्स दैट लाहौर और मुल्तान जो है 2 इम्पॉर्टेंट जो है आपके सिटीज़ वहाँ पे फॉर्म होती हैं, पॉलिटिकल सिटीज़, और अकबर ने जो है लाहौर में जो है किला भी बनवाया था, जिसके बाद जो सबसीक्वेंट जो मुग़ल रूलर्स रहे, जहांगीर और शाहजहाँ, सो इवन दे स्टार्टेड
बिल्डिंग जो है उस फोर्ट के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन करना स्टार्ट हुआ। एंड औरंगज़ेब के आते आते जो है लाहौर assumed a very important political standpoint for the Mughal Empire. It was always there, but क्योंकि हम देखते हैं कि जो उस टाइम पर एक नया रिलीजन जो है खड़ा हो रहा था, सिखिज़म जो है पैर जो है पसार रहा था, एंड स्पेशली जो सिख मिसल थी जो है जो 12 सिख मिसल थी, जिसके बाद जो सिख कॉन्फेडरेसी बनी, जिसके बाद जो है वो जो है उस टाइम पे बनना शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रही। लाइक गोइंग फॉरवर्ड आई लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग इन डिटेल्स। दिस एपिसोड इज लार्जली अबाउट द टाइम लाइन एज टू वॉट ऑल Punjab region has witnessed and why it's so important to understand history of Punjab so as to understand the history of Indian subcontinent for better. After the evolution of Sikhism, now it's really paradoxical. जो हम देखते हैं कि जो there has been intensely deep ties and relations between Sikh gurus and Mughal rulers. At the same time, they were complicated. I mean, हम देखते हैं कि उनके बीच में बातें हो रही हैं between the state and the gurus, but the followers were persecuted. और इसके जो है हम देखते हैं कि मुगल काल के टाइम पे जो है there were persecution of Sikhs and Sikh gurus and the followers. At the same time, there have been constant dialogue between say Sikh gurus and Mughal rulers. So ये एक paradox है. Like going forward, I'll talk about it because this is something which cannot be just explained in just in a passing reference. This is a very deep. One requires very deep understanding of both the statecraft and religious teachings. So once I'm able to understand that for good, I'll be able to explain you as to what exactly had happened. I would recommend that a lot of literature has been written about Sikhism. And especially if you read Harun Khalid's Walking with Nanak, it's one of the best literatures that one could read on Guru Nanak Sahib. So that is one thing I would highly recommend. So please grab that copy and read that. Moving on, Punjab is also the region where the bureaucracy, not just the Mughals, but also the British bureaucracy takes shape. मुग़ल के टाइम पे हम देखते हैं कि अकबर ने जो है अपने पूरी किंगडम थी उसको सूबों में बांट रखा था, और सूबे के अंदर जो है सरकार हुआ करती थी, सरकार के अंदर परगना और परगना के अंदर शहर और विलेजेस। सो एक सिस्टम की वहाँ पे इजाद हुई जिसमें कि जो मनसबदार और सूबेदार का जो दर्जा है वो किसको दिया जाए। सो अगर जो है आपका जो सूबा है, जो प्रोविंस है, उसका जो हेड है, इफ़ दैट हेड हैज़ ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, तो उसको मनसबदार या नाजिम कहा जाया करता था। बट इफ़ दैट दोज पावर्स वर कपल्ड ऑल्सो विद द फाइनेंशियल पावर्स, एंड सो दैट वाज अ पोजीशन विच वाज अकिन टू अ वाइसरॉय ऑफ अ किंग, तो वहाँ पे जो है उसको सूबेदार कहा जाता था। और यही सिस्टम जो है पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ, और हम देखते हैं कि पूरे देश में आगे जो है लागू हुआ ड्यूरिंग मुगल टाइम। और इसके जो कुछ ट्रेसेस जो हैं हम देखते हैं कि इवन ब्रिटिश हैड अडॉप्टेड व्हेन दे स्टार्टेड द सिविल सर्विसेज। सो आफ्टर अनफॉर्चुनेट क्वेलिंग ऑफ द 1857 uprising, the British crown had taken over and they had established their rule here. So first civil services and especially the cantonment that was built in Rawalpindi. पिंडी के बाद हम देखते हैं कि जो है दिल्ली के आसपास के सारे एरियाज जो हैं हर एक 70 से 90 मील की दूरी पे जो है कैंटोनमेंट बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट वाज अ न्यू पॉलिसी, वन कुड से दैट वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश। ऐसे ही जो है जो आपका सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ डीसीज और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो आज की तारीख में भी हैं और आज की तारीख में डीएम के नाम से हम जानते हैं, एंड दे आर द वंस व्हिच हु बेसिकली आर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड दे आर द वंस हु आर न्यूमेरल और नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो आपके जो है शहर चलाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स एंड हु रन द सिटीज़ एंड हु आल्सो एड्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन रनिंग द सिटीज़। तो वो जो है वहीं से आपका पंजाब एरिया से स्टार्ट होता है व्हेन लॉट ऑफ दीज कैनाल कॉलोनीज वर फॉर्म्ड
and the British started introducing bureaucracy, and how the ICS were formed. So slowly it takes shape from Punjab. So again, moving forward, I'll explain these things to you. And fast forward to early 20th century, we see that after the First World War, in which a lot of Punjabi natives had participated along with the British Army. They fought for British Army during the First World War. Punjab witnesses an economic downturn. Economic slowdown जो है पंजाब में होता है, और उसके बाद से जो है पंजाब politics changes for something important vanguard, we can say, in Indian freedom struggle. We witness a bloody event of Jallianwala Bagh massacre, in which General Dyer of the British Raj, he had ordered opening of fire on unarmed innocent civilians who had just gathered over there on festival of Baisakhi 1919, 13th of April, to protest against the detaining and externment, arrest of two outstanding Congress leaders, Saifuddin Kichlu and Dr. Satyapal. उसके बाद जो है we all know what happened in Jallianwala Bagh massacre. और उसके बाद फिर हम slowly we see that Punjab province becomes extremely active in freedom struggle. It was active earlier as well, but post that event we see Punjab province getting extremely active, and ultimately we also witness that Punjab was a province which was divided because of partition of this Indian subcontinent, which effectively took place largely in Punjab, West Bengal and other parts, but largely the areas which were affected were Punjab and West Bengal, and Punjab witnessed a massacre. It was ethnic cleansing on both the sides. It was one of those bloodiest part of Indian subcontinent, which is perhaps yet to be documented in its entirety. A lot of work has been done so as to heal the wounds, which is extremely important. इसको चीज़ को समझना होगा before one starts commenting upon the partition of Punjab or the partition of Indian subcontinent. What were the reasons behind it? Why that partition was never an easy thing, and why it happened what it happened. जो पूरा एक massacre हुआ पूरा पंजाब में, वो कैसे start हुआ, what were the events, what were the triggers, and what were the drivers of the violence across Punjab state. So more about that in subsequent episodes. So this is largely what it is in this episode. So going on, we will definitely talk more about it. But once again, I would like my subscribers to please follow, like, and comment on the episode, and please keep on spreading a word about the open format as one-stop destination for knowing everything about the Indian subcontinent's history. इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए लोगों को कि कैसे इस चैनल के थ्रू आप जान सकते हैं कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का क्या इतिहास रहा है. And also please write to me, let me know what is that you would like to see more, so that it really helps me in framing my content. Thank you, see you soon, goodbye.